Thanks students. Today we will start chapter number 9, coordination compounds. Okay. First of all, we will study some basic concept of this chapter. Coordination compounds. These are the compounds which contain complex ion. ऐसे compound जिनके पास किस types के ion होते हैं? Complex ion. These compounds contain central metal atom like cobalt or cation. We know that metals are positive, that's why we know that it is a cation, which is attached with fixed number of anion or a molecule's ligand through coordinate bond, like this. This is the complex coordination compound. Now, this is the central metal atom. This ammonia is a ligand. This 6 is known as, here we called it coordination number. And this square bracket is known as coordination sphere. This Cl3, the atom present outside this square bracket is known as counter ion. Okay. I am repeating it again that this square bracket in coordination compound we called it coordination sphere. Central metal atom here cobalt. How many ligands are there? 6. Then coordination number is also 6. NH3 is ligand here. Cl3 is a counter ion. Okay. Now, in aqueous solution the compounds retain their property. जब भी हम इनको वाटर में डिसॉल्व करते हैं ये डिसोसिएट कम्प्लीटली नहीं होते. एग्जाम्पल, दे डू नॉट लूज देयर आइडेंटिटी और दे डज नॉट डिसोसिएट इन सिंपल आयन लाइक दिस. ओके. नाउ ligand. What do you mean by ligand? The species or a molecule having at least one lone pair of electrons. ऐसे species जिनके पास क्या होते हैं? एक lone pair होता है. ठीक है. अब ligand को हम लुईस बेस भी बोलते हैं. What we called it? लुईस बेस. लुईस साइंटिस्ट थे जिन्होंने बेस की डेफिनेशन दी थी. द बेस इज नोन एट दैट विच डोनेट lone pair of electrons. ऐसे स्पीशीज जो अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करता है. ओके. लुईस बेस को हम न्यूक्लियोफाइल भी बोलते हैं. ओके. इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कौन करेगा? जिनके पास इलेक्ट्रॉन्स होंगे. मीन्स इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज. ओके. नाउ, what do you understand by metal cation? The species which is electron deficient. Means electrons की कमी होती है किसके पास? मेटल. इसको हम लुईस एसिड भी बोलते हैं. लुईस एसिड को हम इलेक्ट्रोफाइल भी बोलते हैं. We also call Lewis acid as electrophile. Okay. Now, Lewis base again electron pair donor. Lewis base, what we call Lewis base, जो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करते हैं. लुईस एसिड इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर. ओके. लुईस एसिड प्लस लुईस बेस बिकम एन एडिशन प्रोडक्ट थ्रू कोऑर्डिनेट बॉन्ड. ओके. जब लुईस एसिड और लुईस बेस बनता है तो क्या बनता है? एक एडिशन प्रोडक्ट. नाउ, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ डोनर एटम्स अटैच टू मेटल cation or atom. Donor atom means we know very well these are the donor atom. How many donor atoms are attached here? 2. Then coordination number is 2. It can be come in exam in 1 marks. Like here, how many ligands are attached? 4. Then coordination number is 4. Okay. Thanks.